Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sansad TV with your host Kriti Mishra. And in this edition, we'll decode how the Indian law enforcement agencies are adapting to the age of artificial intelligence. And joining us on the broadcast is a very special guest, Additional Director General of Police for Maharashtra Sabha, Mr. Yashasvi Yadav. Sir, welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. Sir, AI has touched and impacted all spheres of life. I'd just like to understand how in this era the nature of cybercrime has changed and how are we using artificial intelligence to combat that? See, AI has hit us like a big thunderstorm and lot of things have proliferated out of it. But one very important thing is that AI has more positive points than negative points. As far as law enforcement is concerned, AI is having a wonderful effect as far as we are leveraging it to fight cybercrime. For instance, we have implemented the Maharashtra Cyber Security Project, which was recently acknowledged by the UN as the top cyber security project in the world. Now, the beauty of this project is that there are so many tools and technologies sourced from all over the world leveraging AI, plus top consultants of the world and experienced and professional police officers all convalesced into under one roof, including a statewide police station. So there are no silos, no coordination problems, and this makes it a very effective cybercrime fighting mechanism. Now, one very important thing that you asked, how AI is affecting the law enforcement capabilities. Number one problem that we are facing is the deepfakes, which is AI generated deepfakes and are very difficult to differentiate or distinguish. Now, it can take the shape of a cybercrime. I'll try to explain it by an illustration. Recently, one of the victims got a call supposedly from his son, speaking in the same tone, voice, and asking for about 50 lakh rupees transfer from one account to another account. The father got a little suspicious. He said, why not resort to a video call? When he video called, he saw his son actually speaking. So he transferred that money. Ultimately, when he called his son after a while that whether he's got the money or not, incredibly, the son said, I had never made a phone call to you. When this case was presented to us, we found that there were three types of cybercrime merged into one to make it a supra crime. Number one, call spoofing apps, whereby the number was spoofed to look like his son's number. Secondly, voice modulation AI, where certain very advanced AI tools were used to make the pitch, frequency and amplitude of the sound just like his son. And third was a deepfake of the son to make him speak whatever the scammer wanted to speak in exactly his video. So, unsuspecting father had no way to distinguish. Though he was an aware citizen, he tried to, check by all possible means, but there was no way to find out. Later on, when we found out, it was realized that he was a cousin of that particular person who wanted to extort or scam or dupe 50 lakh rupees from the affluent businessman. So this is the crime which enlightened us, woke us up from deep slumber, and we realized the potential of AI. Whenever in an interview this question is asked, I illustrate it with this crime where three different forms of AIs are merged into a wonderful crime. And this crime can be replicated in geospace, geopolitics, in any form. A president can be made to speak to another president in the same way, and human eye can't distinguish it. That's why at our center we have tools like Authentify, which can find in 10 seconds whether a video is authentic or deepfake, because it picks up body languages, signals, telltale signs which human eye can't. So this is the potential of AI and this is the mechanism by which we try to negate it. सर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बार हिंदी में भी बताएं कि किस तरह का साइबर क्राइम है और कैसे हमें बचना है इससे। देखिए, एआई जो है असीम संभावनाओं का द्योतक है। इसके कुछ पॉजिटिव
कंसिक्वेंसेस भी हैं और कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं। तो हमें अगर क्रिमिनल्स या साइबर क्राइम से आगे रहना है तो सबसे पहले ये रियलाइज करना है एआई को हमें लेवरेज करना पड़ेगा अपने टूल्स, टेक्नोलॉजीज, मेथड्स में, जिससे हम क्रिमिनल्स के एक कदम आगे रह सकें। लेकिन सबसे पहले ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिमिनल स्मार्ट से स्मार्टेस्ट होते जा रहे हैं। प्रतिदिन उनके नया मोडस ऑपरेंडी आ रहा है और इस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन आपको एग्जाम्पल दूंगा। कुछ ही दिन पहले ये एग्जाम्पल मेरे पास आया जिसमें एक पिता को एक फ़ोन कॉल आया अपने ही बेटे के फ़ोन नंबर से। उस बेटे ने कहा मुझे कुछ इमरजेंसी है, 50 लाख रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। पिता को कुछ शक हुआ लेकिन उसकी आवाज़ हूबहू उसके बेटे से मिल रही थी। तो उसने पूछा कि क्या आप तुम मुझसे वीडियो कॉल कर सकते हो। जब उसने वीडियो कॉल किया तो हूबहू उसका ही बेटा 50 लाख रुपए मांग रहा था। तो पिता ने उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। लॉ इन्फोर्समेंट की दृष्टि से पिता ने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, उसकी आवाज सुनी थी, उसका नंबर देखा था और उसका वीडियो चित्रण भी देखा था। तो कोई इट्स लाइक अ फूल प्रूफ क्राइम। बाद में ये पता चला कि उस बेटे ने कभी फोन नहीं किया था अपने पिता को और ये पैसा मांगा गया। तो ये एक 3 एआई टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके ये क्राइम किया गया था। सबसे पहली कॉल स्पूफिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कि नंबर, आप किसी भी नंबर के ऊपर अपना नंबर, कोई भी नंबर मास्क करके वो दिखा सकते हो कॉलर को कि ये जिस व्यक्ति का नंबर है वही दिख रहा है। दूसरी वॉइस मॉड्यूलेशन एआई टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड क्लास टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें पिच, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वॉइस आप हूबहू जिस भी व्यक्ति का चाहे उसका बना सकते हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन का बनाना चाहें तो बिल्कुल वैसी आवाज आपको आएगी। इसके अलावा उसके बाद उसने डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति का वीडियो के ऊपर उसने डीप फेक चलाकर एग्जैक्टली उसी के लड़के का वीडियो, वही लिप मूवमेंट्स बना दिया। वो कुछ और बोल रहा है लेकिन उसको दिखेगा कि वो वही व्यक्ति जो वो बोलना चाह रहा है वही बोल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी प्रेसिडेंट का या किसी क्रिकेटर का या किसी सेलिब्रिटी का लोग आजकल डीप फेक बना रहे हैं। ये तीनों टेक्नोलॉजी को मर्ज करके आज तक केस हमारे पास नहीं आया था और मेरे ख्याल से इंडिया में किसी के पास नहीं आया होगा। लेकिन ये 3 टेक्नोलॉजी को मर्ज करके जो ये केस आया, इसने हमारी आंखें खोल दी, हमें एआई के डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चिताया। उसके बाद हमें ये पता चला कि आपकी जो केवाईसी की वीडियो कॉलिंग होती है उसको कई लोग इसी तरह से सरपास कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का आप वीडियो कॉलिंग केवाईसी करा सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है एआई का पोटेंशियल डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन इसको रोकने के लिए हमने क्या किया है कि हमने वर्ल्ड का बेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लाए हैं जो एआई वीडियो को 10 सेकंड के अंदर रियल वीडियो है या नहीं उससे डिस्टिंग्विश कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेजेस, लिप मूवमेंट्स जो ह्यूमन आई कांट डिसर्न, उतने फ्रेम्स में ब्रेक करके मशीन कैन डिसर्न, एआई कैन डिसर्न। तो एआई का काट एआई है, तो उससे हम 10 सेकंड के अंदर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीप फेक वॉइस है या डीप फेक वीडियो है। इसी तरह से हमने अभी रश्मिका मंदाना जी का जो पोर्नोग्राफिक वीडियो हुआ था उसको सर्टिफाई किया, ये डीप फेक वीडियो है। एक पायल गेमिंग, बहुत ही बड़ी गेमर है वो ई गेमिंग की, उनका भी इसी तरह से पोर्नोग्राफिक वीडियो पब्लिश हुआ था, तो हमने उसको भी आइडेंटिफाई करके उनको सर्टिफिकेट दिया। जब उन्होंने वो सर्टिफिकेट अपने सोशल मीडिया में डाला तो उनकी रेपुटेशन काफी हद तक सैल्वेज हो पाई। Sir, I'd also like to understand how is your department using AI-driven data analytics to prevent, detect, and of course curb cyber crimes? See, firstly we have to understand how criminals are using AI. The illustration I gave was a very sophisticated one, but at a very fundamental level, criminals use AI to cover their tracks, to cover their IP addresses, to cover their digital footprints. So we have to uncover them. So as I said, the best defense against nefarious use of AI is AI itself. How is artificial intelligence helping you in forensics? AI is already helping us in forensics because of the vision of our Honorable Chief Minister. He allocated 1,500 crore rupees to us 5 years back to develop these tools, technologies, procure them from all over the world. So that's why we have state-of-the-art tools and technologies which relate to device scanning, device analytics, which relate to social media monitoring, which relate to dark web monitoring,
which relate to cyber forensics, by which we are using an even big data analysis. So AI is being used. Suppose a criminal's name is just given. So the AI will be used to scan the whole internet, including darknet, which is 10% of the internet not visible to surface net, and then come up with all types of information, be it social media profiles, be it tower dump, be it call data records, be it bank accounts, be it newspaper reports about that person in a few seconds. So that way we have caught so many criminals. Facial recognition again is very beautiful illustration of AI. Any world-class criminal comes to Delhi with plastic surgery or with his facial features changed. How do we detect it? Human eye will never be able to detect it. But now law enforcement agencies are integrating their CCTV with AI facial recognition features. So the person, by the difference ratio of the different distance between his eyes and nose, by such calculations, a person can be reliably identified as a known terrorist or a known criminal and arrested on the spot. So this way AI is helping us in forensics, including deepfake identification, as I've already told you. As consumers, how are we expected to be vigilant? First of all, I'll give you an analogy to answer this question. If we take out our car and go from X point to Y point in Delhi, theoretically there's a very small probability that that person will be killed on the road in an accident. To further diminish this probability, we use various mechanisms like use of seat belts, following traffic rules, speed limits, etc. So similarly, when a citizen takes out his car in information superhighway or internet, there are three things he needs to do. Number one, be aware of the rules of information superhighway. Number two, to diminish the probability of he being scammed or being caught in some sort of a problem which will be harmful for his either reputation, or he even lose his life, or even lose his lifetime earnings. There are three dangers. So follow cyber hygienic behavior. And number three, just like you have to demonstrate your skill of driving before you get a driving license, you have to demonstrate your skill of navigating the information superhighway to become eligible to use it. Another example I want to give you. A smartphone, a modern smartphone, has about 1,10,000 features. But a survey conducted by my department suggested that people are using only 40 to 50 features. So 50 features versus 1 lakh features roughly available. So it is almost negligible utilization of the potential of a supercomputer on your palm. And this is the gray area or the dark area where a person is oblivious of these features, which cyber criminals utilize. For instance, many of us don't know that WhatsApp has a two-factor authentication. And I can say with definite confidence that 90% of the people have not activated it. However, if you activate your two-factor authentication in WhatsApp, your WhatsApp can never be hacked. So this is a very, very simple information amounting to cyber hygienic behavior, but people are not aware. So I urge everyone, all the citizens listening to this interview, please visit our Maharashtra cyber social media platforms. We come up with advisories, movies, documentaries, cyber anthems, jiggles and everything. साइबर हाइजीनिक बनिए आप. क्या होता है ये साइबर हाइजीनिक बिहेवियर? साइबर हाइजीनिक बिहेवियर एक बहुत अम्ब्रेला ऑफ बिहेवियर्स. इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. आप अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा वर्ड लीजिए एज योर पासवर्ड. फॉर इंस्टेंस सुपरकैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सप्लियाडोशियस, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी. और आपको ये आप इस फसाड में आ सकते हैं या इस प्रिटेंस में आ सकते हैं कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नोबडी विल बी एबल टू जज इट, क्योंकि ये वर्ड ही लोगों को नहीं पता है बहुत सारे. लेकिन ये वर्ड एक ब्रूट फोर्स अटैक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो फ्रीली अवेलेबल है डार्क नेट में, 0.1 सेकेंड में ब्रेक हो जाएगा. 0.1 सेकेंड, नॉट इवन 1 सेकेंड, बिकॉज इट्स अ डिक्शनरी वर्ड. However, if you just make a 5-digit password,
say capital A, small x, exclamation mark, question mark and asterisk. It's very simple. It will take the same software 60 years to crack. That means next to impossible. This is a very interesting tidbit. So this is cyber hygienic behavior in a nutshell. So, but people are not expected to remember these software. So they are very credible apps, including one app being created by us, Maharashtra Cyber Department, which is called Password Manager Apps, which will be your biometric. It will open up only by your biometric, and it will assign passwords to your 30, 40 accounts wherever you are. And those will be very robust passwords that nobody can break by brute force attack. दूसरा साइबर हाइजीनिक बिहेवियर आपको बताता हूं. 6 टाइप के थ्रेट वेक्टर्स होते हैं. उनसे हमें कैसे बचना चाहिए, वही साइबर हाइजीनिक बिहेवियर होता है. जैसे कि आपको एक फोटोग्राफ भेजी आपके फ्रेंड ने व्हाट्सएप में, जिसमें लिखा हो हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग. नेचुरली यू विल ओपन इट. उसको कहते हैं स्टेगनोग्राफी अटैक्स, जिसमें फोटोग्राफ के पीछे एक मॉलवेयर छिपा होता है या एक वायरस छुपा होता है. आप फोटोग्राफ खोलेंगे, वो मॉलवेयर आपके कंप्यूटर में अटैच हो जाएगा. आपका वो फ्रेंड ही नहीं होगा, वो कॉल स्पूफिंग, नंबर स्पूफिंग से आपको मैसेज आ सकता है. दूसरा, इंटरनेट में हम कहते हैं समटाइम्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स आर आवर बेस्ट एनिमीज इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. हो सकता है वो आपका फ्रेंड भी हो, आपके एसएमएस चेक करना चाह रहा हो, आपके टेक्स्ट मैसेज चेक करना चाह रहा हो, आपकी वॉइस कॉल सुनना चाह रहा हो सकता है. ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं. सो इतना सरप्राइजिंग बात नहीं है ये. और हो सकता है वो आपका फ्रेंड ना हो, लेकिन प्रिटेंड कर रहा हो, उसी नंबर को डिस्प्ले करा रहा हो आपके फोन में. तो वंस यू ओपन दैट फोटोग्राफ, इट इज कॉल्ड वन क्लिक मॉलवेयर. मतलब आपने एक क्लिक किया, वो मॉलवेयर आपके फोन पे अटैच हो गया. इसको बचने के लिए आपको बहुत सारे टाइम अपना इनबिल्ट स्कैनर होता है. फोन स्कैनर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो फोन स्कैनिंग एक फीचर होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता है. आप उसको स्कैन करते रहें, आपको तुरंत पता चल जाएगा कोई मॉलवेयर आपके फोन में स्टैब्लिश हो गया. अगर आपको वो भी ना समझ में आए तो आप हमारे सेंटर में लाइए आपका फोन, हम 2 मिनट में स्कैन करके बता देंगे किसने कब किस तारीख को आपका फोन में मॉलवेयर डाला है, अगर डाला है तो दूसरा ये है कि जब भी अनसस्पिशियस लिंक्स आए, कभी भी आप उसको क्लिक ना करें, भले ही उनका क्लिक बेट बहुत ही अट्रैक्टिव हो. तो ये जो आपको साइबर हाइजीनिक चीज की मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट आज आपके इंटरव्यू में नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं. एक केस आया जिसमें एक पर्सन ने अपनी वी साइन करते हुए एक बहुत ही मॉडर्न सेल फोन से फोटो खींच के सोशल मीडिया में डाली. अब वी साइन को ये बायोमेट्रिक उसने सोशल मीडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया. आजकल इतने कैमरे में इतने ज़्यादा जूम लेंस, जूमिंग फैसिलिटी है कि उसने उसकी फिंगरप्रिंट्स उससे क्रिएट करी. और फिंगरप्रिंट क्रिएट करके किसने खरीदा वो बायोमेट्रिक? उसकी खुद की वाइफ ने. ये आपको रियल केस बता रहा हूं, साइंस फिक्शन नहीं. और उसने उसके रबर से फिंगरप्रिंट बना के उसका एंड्रॉयड फोन खोल लिया, और उसके बाद आज दोनों में डिवोर्स हो गया. दिस इज अ रियल लाइफ केस. डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही है, अभी तक हुआ नहीं. सो दिस इज अ रियल लाइफ केस. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट आवर डेटा वी कीप इट वेरी कैजुअल. हमें अपने डेटा की वैल्यू नहीं है, खासतौर से बायोमेट्रिक्स की तो वैल्यू नहीं है. अभी गिलबली आर्ट आया था, उसमें लोगों ने अपने फेस दे दिए. वो किस विदेश के किस सर्वर में आपका फेशियल रिकॉग्निशन के रूप में सेव्ड है आपको पता नहीं. बाद में यदि वो पर्सन कभी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसका फेशियल रिकॉग्निशन यूज करके उसका फोन भी खोला सकता है, और तब तक बायोमेट्रिक्स से शायद बैंक अकाउंट्स भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट से भी पैसा निकाला जा सकता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डेटा वी गिव ऑन सोशल मीडिया. आप फेसबुक यूज करते होंगे, मेरे ख्याल से फेसबुक करते होंगे, एक्स यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी यूज करते हैं. 10-15 साल से कर रहे होंगे. आपको आइडिया है क्या डेटा आप उसको दे रहे हैं अपनी मर्जी से? आपके 15 साल से अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके 15 साल के मिनट टू मिनट लोकेशंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स के पास है. ये तो बहुत छोटी बात है. आपका फिजिकल एड्रेस उसके पास है, हालांकि आपने कभी दिया नहीं,
क्योंकि आपने कभी ब्लिंकिट से या किसी से अपना चीज़ मंगाया होगा और वो SMS उसके पास है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके पास हैं, उसको पता है कि आप कब आपको हार्ट अटैक आ सकता है या डायबिटीज, आपको नहीं पता होगा। और तो और आपके पॉलिटिकल लिंकेजेस उसके पास हैं, आप किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं वो भी उसको पता है। इसके अलावा आपने एक और जगह उसको परमिशन दी है, हियर ऑल वॉइसेस एंड साउंड्स। इसका मतलब जब आपका फोन बंद है, आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो भी एम्बिएंट वॉइस भी फेसबुक सुन रहा है। इसीलिए कभी कभी आप जब कहते हैं मैं शिमला जा रही हूं, तो एकदम से आपको ऐड आने लगते हैं कि शिमला के बेस्ट रिजॉर्ट्स कौन से। हम इसको कोइंसिडेंस मानते हैं, पर ये कोइंसिडेंस नहीं है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस के बाद जब कोर्ट ने कहा कि क्या डेटा ले रहे हैं आपको यूजर्स को बताना पड़ेगा, इसलिए फेसबुक अब ये बताता है सेटिंग्स में, वरना पहले बताता भी नहीं था। So we have to be very careful about what kind of data we are doing, because data mining itself is a very lucrative and AI based field. And finally, sir, before we wrap up this conversation, are we ready for this cyber warfare era? We are ready provided we are proactive. मैं आपको बताऊं, AI की अभी बात कर रहे हैं, but we should think beyond AI. Beyond AI is quantum computing, a big danger lurking on the corner. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है कि आज का जो सुपर कंप्यूटर, बेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो काम 50 साल में कंप्यूटिंग कर सकता है, वो 6 सेकंड्स में कर सकता है। 6 सेकंड्स, इतना पावरफुल एक्सपोनेंशियली केपेबल कंप्यूटिंग मशीन, क्वांटम कंप्यूटर। क्यूबिट्स में उसकी स्पीड मेजर की जाती है एंड इट इज फिनोमिनल। इससे क्या डेंजर है? आप तो कहेंगे तो अच्छी बात है, हमारे कंप्यूटिंग और तेज हो जाएगी। आपके सारे एनक्रिप्शंस ये कुछ ही मिनटों में ब्रेक कर सकता है, इंक्लूडिंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो व्हाट्सएप बोलता है, इंक्लूडिंग RSA इंक्रिप्शन जो बैंकिंग इंडस्ट्री यूज करती है। मतलब आप किसी का भी पैसा किसी के अकाउंट में डाल सकते हैं, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड का इंक्रिप्शन ब्रेक हो सकता है, यहां तक कि आपका बिटकॉइन भी हैक हो सकता है। आपके सारे बिटकॉइंस कहीं ट्रांसफर हो जाएंगे, पूरी देश की इकोनॉमी खत्म हो सकती है, फाइनेंशियल टेररिज्म एट इट्स पीक हो सकता है। But are we prepared for quantum computing? So we need to find safeguards against quantum computing while we are talking about AI. So these are the threats. This is the visionary approach that we need to take and collate all these threats and find a viable, reasonable and effective countermeasure against it. Well, on that note, sir, thank you so much for joining us. You've startled us with all those stories, with all those cases. But of course, you said that as consumers, we have to be very vigilant and hoping for the same. But thank you so much for joining us and sharing your perspective with us. Thank you. Thanks. To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel. And don't forget to like and share them.